a lot of candidates who reach out to us are either working in the roles like content writer, evaluator, and other roles. So what, according to you, draws candidate to these kind of roles? So Paras, would you like to go first? Yes. So the primary thing that draws is, again, let's say you have given 2 attempts, now you need something. Like Datha said, कि most of the aspirants they come from middle class. ठीक है, थोड़े टाइम बाद लगेगा कि 2 साल बाद तुम इंस्टाग्राम चलाओगे, देखोगे कि योर फ्रेंड्स दे आर रोमिंग इन जर्मनी, कोई कहीं पर कंसल्टेंट है, कोई इंजीनियर अगेन, व्हाट आर यू डूइंग? So you will be needing money per week and for your own personal use too. And money and financial independence acts as a personality booster because you are going out, meeting people, and you are growing yourself. तो उसलिए people go and try कि हाँ, because अब मेरे पास 2 साल की नॉलेज है, क्यों ना मैं उसको एक थोड़ा फाइनेंशियली कन्वर्ट करूँ. तो दिस इज वाई सबसे जो इजी वे आउट निकल कर आता है वो होता है इवेल्युएटर का एंड कंटेंट राइटर्स का. तो दिस इज वेयर यू एंटर इट, एंड इसके बाद ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, बट इन दो फील्ड में देर आर वेरी लिमिटेड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स. बिकॉज लेट्स से कि इवेल्युएटर को दे पे 30 रुपीज पर क्वेश्चन. टू 2018 2016 में भी वही था, आज भी 2025 में 10 years बाद भी दे आर गिविंग द सेम थिंग. व्हाई? बिकॉज दे नो कि अगर तुम नहीं कर रहे तो और बच्चे हैं 4 अटेम्प्ट वाले, वो आकर इवेल्युएट कर देंगे. बिकॉज पीपल आर रेडिली अवेलेबल टू डू दैट पर्टिकुलर जॉब एट सेम प्राइस पॉइंट. ठीक है, एंड देयर विल बी समवन जो आपको आकर थोड़े टाइम में रिप्लेस करेगा ही करेगा. So the only thing that lets, based upon your experiences, you can either go into mentoring, you can go into faculty, or as Datta said, into management. तो मैनेजमेंट में अच्छी चीज ये है, यू कैन हैंडल बिजनेस, यू कैन हैंडल मार्केटिंग, एंड उसके बाद यू कैन डायरेक्टली मेक अ स्विच. बिकॉज कॉर्पोरेट्स नो दैट यू हैव वर्क विद एडटेक्स, आपने उसको लेट्स से 10 से 100 पर ग्रो किया, तो दैट एक्सपीरियंस इज वेरी हेल्पफुल. एंड इनफैक्ट पॉलिसी कंसल्टिंग, इम्पैक्ट कंसल्टिंग में भी दे वैल्यू इट. एजुकेशन कंसल्टेंट्स की जॉब्स निकलती हैं, आस्क पीपल की जिन्होंने एडटेक्स में काम किया है, कम एंड अप्लाई. ठीक है, so that experience becomes very helpful. For example, I also applied and उनकी रिक्वायरमेंट थी कि आपने एडटेक्स में गेमिफिकेशन ऑफ कंटेंट पर काम किया होना चाहिए. ठीक है, तो अब उसमें एडटेक्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी. यू हैव टू बी द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. उन अपॉर्चुनिटीज को लेना है और उसके बेसिस पर यू हैव टू एक्ट. ठीक है, कंटेंट डेवलपर और इवैल्यूएटर इज नॉट अ स्टेबल प्रोफेशन. ठीक है, और उसको एज अ स्टेबल प्रोफेशन आई थिंक कंसिडर करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें देयर इज लिमिटेड, वेरी लिमिटेड ग्रोथ. ठीक है, उसके बाद दे विल गिव यू की प्रोडक्ट्स हैंडल कर लो, टेस्ट सीरीज हैंडल कर लो, बट अल्टीमेटली वही होगा, 4 साल बाद कोई और आएगा जो आपसे अच्छा वो चीज हैंडल कर देगा, लेस प्राइस पॉइंट पर या सेम प्राइस पॉइंट पर. तो दिस इज व्हाट यू हैव टू थिंक. Okay, but let's say when we talk about the careers in this, 90% of the candidates are typically engaged in these kind of roles, right? यस यस, बिकॉज दैट्स अ गुड थिंग उनके लिए कि फाइनेंशियली मिल भी रहा है एंड दे आर लर्निंग जो एग्जाम में चाहिए. तो उसे पता है कि अगर 6 महीने बाद जाकर मैं प्रीलिम्स भी दूं, अल्टीमेटली मेरा फायदा ही है, बिकॉज आई एम नॉट सिटिंग आइडल, आई एम गेटिंग अ वर्क एक्सपीरियंस फुल टाइम और लेट्स से कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्क एक्सपीरियंस. एंड वो नॉलेज जो मेरी वर्क प्रोफाइल की है, दैट इज हेल्पिंग मी इन द एग्जाम. अब लेट्स से मैं एक कंटेंट डेवलपर को लेट्स से एसआई इन दिल्ली पुलिस से कंपेयर करूं, तो दैट पुलिस ऑफिसर इज वर्किंग 12 आवर्स डे एंड नाइट, कंप्लीटली डिफरेंट फील्ड में, और यहाँ कंटेंट डेवलपर लेट्स से सेम ही सैलरी ले रहा है. एडवांटेज फिल्म्स में कंटेंट डेवलपर की ज्यादा हो सकती है, क्योंकि 6 महीने से वही चीज पढ़ रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, एंड बार बार रिविजन भी हो रही है. तो दिस इज व्हाई एस्पिरेंट्स फाइंड इट lucrative and useful. Okay, okay. Thank you for sharing this. Datha, would you like to add something around the careers in the overall industry and which one to pick, who should pick? यार इसमें आई कंप्लीटली एग्री विद पारस. पॉइंट नंबर 1 कि कंटेंट डेवलपर ठीक है, उस टाइम पे कर लो, टिल मीनवाइल कर सकते हो, जस्ट टू सस्टेन योरसेल्फ एज अ पॉकेट मनी. पॉकेट मनी की तरह अर्न कर सकते हैं, बिकॉज इफ यू लुक एट ग्रोथ वाइज, उसमें क्या है, मतलब कंटेंट बनाओगे लेकिन कब तक बनाओगे? आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम योर अटेम्प्ट्स विल बी एग्जॉस्टेड भैया. एंड इन कंटेंट डेवलपमेंट यू नीड टू बी कॉन्स्टेंटली इन टच विद द कंटेंट, रीड द कंटेंट. एंड जब आप अटेम्प्ट से दूर चले जाते हो तो फिर पढ़ते नहीं, और दो एज ए पारा सेट की कोई दूसरा आएगा और सस्ते में करके दे देगा विद मच बेटर क्वालिटी. एंड फ्यूचर की बात करें तो कंटेंट क्या बनेगा? डेवलपर बनेगा, रिव्यूअर बनेगा, तो प्रोडक्ट हेड बनेगा. उसके बाद इफ यू लुक एट दूसरे इंडस्ट्री में पूछना है तो यू डोंट हैव एनी अदर अपॉर्चुनिटी अपार्ट फ्रॉम पब्लिशिंग हाउसेस. और उसमें भी बहुत सारे लिमिटेशंस होती है जिस लेवल पे जो कोचिंग इंडस्ट्रीज पे करती है. You won't get the same amount paid in a publishing house until unless it's Wiley or some other international brands, जिसमें जाना बहुत मुश्किल है. Second comes teaching. Teaching is a very good job. You'll get a good amount of salary, and इस पे डिपेंड करता है कि आपकी खुद की थॉट प्रोसेस कैसी, कि आप करना क्या चाहते हैं लाइफ में. लाइक आई हैड एन अपॉर्चुनिटी बैक इन 2018 एंडिंग अराउंड 2019 में, बट मुझे नहीं जाना था बिकॉज मुझे पता है कि भैया आई वांट टू लर्न समथिंग न्यू एवरी डे, एंड आई वांट टू एक्सप्लोर मोर थिंग्स. बिकॉज टीचिंग में होता है, इट इज अ वेरी गुड प्रोफेशन, इट गिव्स यू रियली गुड मनी, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू आर स्टक इन द सेम लूप. मतलब आप इस साल वही पॉलिटी पढ़ाएंगे, 20 साल बाद भी वही पॉलिटी पढ़ा रहे हैं. मतलब इट इज अ गुड थिंग दैट he or she is becoming a teacher and training a lot of people, but for me it was not कि मैं नहीं कर सकता. मतलब I can't just do the same thing again and again for continuously for years, और years छोड़ दो, मतलब month on month same रहेगा. So it's a good as I said, professionally it's a very good job. पैसे बहुत है, मतलब कोचिंग इंडस्ट्री वाले बहुत पैसे देते हैं उसमें, but it also personally depend करता है कि आप करना क्या चाहते हो.
अब इसमें ये वाला फैक्टर होता है कि एज ही वाज सजेस्टिंग कि ये इम्पैक्ट कंसल्टिंग में जा सकते हैं, मतलब कुछ लोगों को होता है कि नहीं मुझे करना है, कुछ करके दिखाना है, कुछ करके दिखाना है। जैसे कॉलेज में वो नहीं होता है शपथ लेके आते हैं कि हम आईएएस करेंगे, कुछ छोड़ेंगे, कुछ दुनिया देश के लिए कुछ करेंगे। हाँ ठीक है भाई, जाओ इसमें जाके देखो वर्किंग कैसे होती है, एंड इसके साथ साथ करियर भी बनेगा। एंड द अदर पार्ट इज कि एडटेक के बारे में बात कर रहे थे, विच इज अ मैनेजमेंट पार्ट। आई शिफ्टेड टू मैनेजमेंट बिकॉज इन द फ्यूचर डाउन द लाइन फर्स्ट थिंग इज आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि टॉप पे कैसे काम होता है, बिजनेस क्या है, मार्केटिंग क्या होता है, और प्रोडक्ट को कैसे सेल कर सकते हैं, सो दैट आई कैन स्विच, लेट्स से इफ आई वांट टू स्विच टू अ डिफरेंट इंडस्ट्री, फॉर मी इट विल बी लिटिल easier because I am not going too much into academics. So this is completely non-academic. And there is one other part, I think Paras has missed out, is the online content creator part, which my previous company used to ace on it. कि भैया कुछ भी करो लेकिन YouTube और सोशल मीडिया पे वीडियो बनाओ, ताकि you will become so big that so that you can be self sustainable on your YouTube channel, and as well as कि आपको you know how YouTube thing works, branding and everything. So that is one part I would like to add on. Okay, thank you for adding this perspective. And one more thing I would like to add on कि he Paras spoke about switching of careers में कितना दिक्कत होता है, ठीक है। I face the same personally, I face the difficulty कि जब मेरा I think this was around COVID कि मेरा attempts खत्म हो चुका था, and I wanted to leave this industry for once and all because कि as I said मेरे पास भी था वो UPSC लव, and बहुत ज्यादा अलग लेवल पे था, तो मुझे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था। ठीक है, वो ब्रेकअप होना था तो लेकिन हो गया। बट वंस इट हैपेंड आई वाज लाइक चलो ठीक है भाई, इस इंडस्ट्री को छोड़ देते हैं, ओआरएन छोड़ देते हैं, लेट्स आई केम बैक टू माय होम टाउन, एंड I didn't know, as I said, I didn't know how to make a resume, but I started applying to all the companies. I think I almost applied to 500 or 600 companies. उस टाइम पे लिंक्डइन थोड़ा बूम पे था क्योंकि कोविड था, लोग खाली थे, तो लिंक्डइन थोड़ा बूम पे था। जो दिख रहा अप्लाई करो, जिसकी पेज दिख रहा करियर पेजेस ओपन करो, सब पे डालो resume. And you would not believe कि मेरे को out of 500 or 600 or company applications that I put in, I got only 2 calls which were for an executive level. After 4-5 years of experience, they were offering a salary of 15,000. तो वहां पे मेरे को लग रहा है कि यार मैं मतलब I I was मतलब I was shocked कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है टू गो बैक टू दैट इंडस्ट्री ओनली, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। एंड आई डिडंट हैव मच पीपल टू सजेस्ट कि हाँ ठीक है, इम्पैक्ट कंसल्टिंग अभी थोड़ा बज वर्ड बन गया, बट बैक देन कोविड के टाइम पे इतना नहीं था। अगर शायद उस टाइम पे पता होता तो मैं अप्लाई करके शायद मैं भी स्विच कर लेता। बट देयर वाज नो वन टू टेल मी कि हाँ भाई इस साइड चले जाना। डेटा एनालिटिक्स वाज आल्सो बिग थिंग कि उस टाइम पे ऑनलाइन कोर्सेज बहुत ज्यादा चल रहे थे, बट बीइंग अ सिविल इंजीनियर आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इट, बिकॉज़ सिविल इंजीनियर को बस बिल्डिंग बनाना होता है, तो रोड बनाना होता है, तो इंटीरियर पे जाना होता है। बट आई नो लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु वेंट इनटू दैट आईटी सेक्टर, बट बताने वाला कोई तो होना चाहिए, लेकिन कोई नहीं बताता ये सब चीजें कि हाँ मे बी इट माइट बी अ स्मॉल कोर्स ऑनलाइन, लेट्स से ऑन एनी एटेक प्लेटफॉर्म। उससे कोचिंग लेने से लॉट ऑफ पीपल आई नो कि हैव लैंडेड इन जॉब्स यूपीएससी के साथ, बट दे नेवर हैव टोल्ड मी कि हाँ भाई ये कर सकते हैं। बट साइलेंटली किया, नौकरी किया, फिर निकल गया आराम से, एंड नाउ दे आर इन अ वेरी गुड पोजीशन। So तो वो रेज्यूमे में जो लिखना होता है ना वो पता नहीं होता है, और जो भी लिखते हैं उसकी वैल्यू नहीं होता। लाइक आई यूज्ड टू वर्क, मतलब पहले कंपनी में जब करता था तो वहाँ पे एक टाइटल होती थी मेंटर। ठीक है भाई, ठीक है तो मेंटर है, लेकिन मेंटर जो टाइटल लगाओगी वो कोई एचआर कॉर्पोरेट विप्रो में बैठी है, उसको क्या पता कि मेंटर क्या होता है। तो भी ऑनेस्ट, मतलब एज अ लेट्स से आई एम एचआर, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट यूपीएससी एबीसीडी, कुछ नहीं पता है। आप रिटर्न किया, मुझे रिज्यूमे दिखा जिसमें लिखा है कि आई बीन एन एकेडमिक मेंटर, मैं इतने लोगों को मेंटर किया हूं। मुझे क्या मिलेगा उससे, मतलब एज एन एचआर मेरे को दिखता है यार, आई डोंट नो व्हाट दिस जॉब इज, आई डोंट नो व्हाट ही और शी हैज डन, तो आई जस्ट डिस्कार्ड दिस रिज्यूमे। सो वही मतलब देयर आर लिमिटेशंस कि कुछ कुछ रोल्स ही आगे जाके हेल्प कर सकते हैं, जो व्हिच कैन सो दैट दे कैन स्विच टू अदर इंडस्ट्रीज। okay, understood. Just a couple of questions here. जैसे आपने यहाँ बताया, तो here let's say instead of taking up a role as a content writer or some other role, अगर if a candidate really want to switch to something else, then maybe they can go for some upskilling program alongside or an internship in a related area, which can actually act as a strong backup option for them in the future, right? So इसमें एक और प्रॉब्लम क्या है कंटेंट राइटर में, as you mentioned, the great thing is let's say if you want to work maybe for 5 months, आपको कुछ पैसा चाहिए, that is fine, but once you start making some money out of it and you keep on giving the attempts, so since the money inflow is already there to some extent, you keep on giving attempt after attempt under the flawed impression that you are already at least working somewhere, so it may be that of use at some point of time, but that doesn't happen, as you pointed out. Another part of the story, as you mentioned, कि भाई getting into the management role is really beneficial, and I have also personally experienced this. In fact, I have guided a lot of candidates कि भाई यहाँ पे let's say if you are working as a category manager in an EdTech platform, tomorrow you can work as the category manager for let's say Urban Company or Myntra, right? क्योंकि आपको वो सब फंडे तो आते हैं, but at the same time, what are the barriers to getting into those roles? Because like based on my understanding, relatively a very limited set of people are able to get into those roles. So Paras, what is your take on this? Yes, so Kyasu, rightly pointed out by you. Based upon my experience, I would say that they go for top B schools or top IITs, जैसे वो कैटेगरी मैनेजर्स हायर करते हैं। ठीक है, जिधर भी मैंने काम किया यूजुअली आईआईएम से, आईएसबी से, हाँ डायरेक्टली कैटेगरी मैनेजर्स आ रहे थे। एंड कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बस आईआईटी से ही अपनी सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल करी, एंड उसके बाद बिकॉज ऑफ दैट आईआईटी का टैग गेट का जो दत्ता ने बोला, वही उस वजह से ही गॉट इनटू कैटेगरी मैनेजर एटेक में, एंड उसके बाद स्विच कर इवेंट इनटू फैंटेसी गेमिंग वाली कंपनी में एज कैटेगरी मैनेजर। तो दिस इज वन थिंग। एंड एज अ फ्रेशर अगर आप कंटेंट डेवलपर से मैनेजर में जा रहे हो, कोई भी ऐसे नहीं दे सकता। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू लैंड दैट जॉब।
क्योंकि एमबीए में बिकॉज दे हैव फर्स्ट एक्सपीरियंस, दे हैव ऑलरेडी प्रूव कि हाँ वो ग्रो कर सकते हैं, कैटेगरी मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो कंपनी के लिए क्या है, उन्हें बस आउटपुट चाहिए कि वेदर यू कैन डू दिस जॉब और नॉट। सो व्हाट यू कैन डू इज पहले कुछ इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज देख सकते हो, या फिर कुछ बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट्स हायर करती है कंपनी, ठीक है। तो वो मैनेजर के यूजुअली नीचे ही होते हैं, एक दो लेवल्स नीचे होते हैं। तो एज एन एसोसिएट यू कैन वर्क वहां से एक्सपीरियंस लेकर देन यू कैन मूव टुवर्ड्स कैटेगरी मैनेजर। Okay, great, fantastic. Datta, would you like to add something to it? ओके, सो द मेजर बैरियर वुड बी कि एक्चुअली क्या है ना, इट इज फर्स्ट थिंग इज दैट कि जनरली कॉर्पोरेट्स में ऑर्गेनाइज होता है, ये अनऑर्गेनाइज होता है। तो यहाँ पे कोई वो नहीं होता कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि इनको वो बनाना है, इनको ये बनाना है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि वन इज एकेडमिक, वन इज नॉन एकेडमिक, ठीक है। एक बार एकेडमिक में घुस गया तो भैया ये मैनेजरल रोल्स में घुसना इज वेरी टफ। तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट थिंग इज दैट कि द पे कंपेयर टू एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक, एकेडमिक रोल्स पे हाई जनरली, नॉन एकेडमिक इज नॉट दैट, मतलब इतना पेएबल नहीं होता। लाइक आई हैव अ पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब व्हेन आई वेंट टू माय मैनेजर फॉर अ हाई, ही टोल्ड मी वन थिंग कि दत्ता यार देखो, एडटेक में चलता है तो फैकल्टी का चलता है, बाकी वी आर जस्ट एम्प्लॉइज। तो फैकल्टी गेट पे एकेडमिक साइड इज ऑलवेज अ बेटर पेइंग ऑप्शन, बट फ्यूचर वाइज देखा जाए तो वो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम दे वैनिश। बट ये लोग आगे चलते रहते हैं कि हाँ क्योंकि कंपनी चलाना है तो इन लोगों को रखना जरूरी है। So in this case, let's say if you want to get into category manager or business manager, as one thing as Paras said, business development executive. The other thing is marketing. You can join as an associate. You can join operations as an associate. You can join admin as an associate, or maybe business. यही रोल से बस घूम फिर के ये जाके जाके they can be promoted after a period of time. They can be promoted. Academic side से non academic आने में बहुत टाइम लगता है, and most of the people don't venture it क्योंकि एक बार academic की वो interest आ गया तो they still stay in the academics only. And बाकी Interesting. as the other part IITs वो सब तो है ही, because a lot of edtechs Byju's ने start किया था. Now more or less all the edtechs are doing it, but the other part of it is after Byju's failure a lot of people also realized it, कि on मतलब MBAs can't bring in that good of a business rather than a person who is in that industry. For that matter, I have met the founder of one top company right now. Initially they used to hire a lot of MBAs, but it created a lot of barrier and the revenues were going down and expenditure was going up. So now they have realized, or a lot of people in the industries have realized, कि we need to go with the people who have given the examination, because education is not a product; it is an emotion with Indians, and that emotion can only be understood by a person who has gone through the process. So what that is also changing, but you don't know. I mean, वो कभी भी कुछ भी हो सकता है. Right, there is a lot of uncertainty, especially in the EdTech currently. मतलब मुझे ये भी लगता है, based on my experience, as you know, we in the past also interacted regarding this, कि normally candidates typically have issues in marketing their profiles, be it through resume, be it through cover letter, be it through LinkedIn profile, or let's say later in the interviews, how they are going to portray their whole journey. That's why, to bridge all this complete gap, supporting with take-home assignment and salary negotiation, we started our market readiness program. Until now, we have helped a lot of candidates with this, and I believe this is especially highly important for ex-UPSC aspirant, because they are never exposed to these things. And that's why they are not able to market themselves well, even when they are, let's say, approaching an EdTech firm, even though they are competent, but they are not able to understand what is their perspective, what are they looking for in the resume. Similarly, the skill set was the major gap. So that's why, after interacting with 1,000 candidates, we realized that a lot of ex-UPSC aspirants bring a lot of knowledge in public policy, but typically lack the hands-on experience. Moreover, all their experience is largely, let's say, informal. It's not like a master's degree. That's why we have also started an applied public policy lab, through which we are supporting the candidates through hands-on project-based upskilling. They are building a mini consulting kind of project. We are delivering all the public policy skills very comprehensively, so that they have something very strong in their resume. Typically, when they come out of the journey, their resume is blank. Or let's say after second attempt, if they feel कि मुझे upskilling करना है, then after third attempt, I'll either take a job or let's say get into the services. So in this meantime, so that they can upskill themselves, there is a strong resume coming out, and then they can get a job. So is there anything else which you would suggest, because you have also supported a lot of candidates and seen and interacted with a lot of candidates? Is there anything else which you would suggest that this should also be provided, this support should be provided? यार फर्स्ट थिंग व्हाटएवर यू आर डूइंग दैट इज फिनोमिनल जॉब, कि अगर मेरे को शायद 2016-17 में मिल जाता तो मैं उसी टाइम पे कर लेता, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट एक्चुअली में सी एट द एंड ऑफ द डे क्या बनना है भाई, डीएम बनना है, डीएम बन के तो यही सब काम करना है, तो बिना डीएम बन के भी काम कर सकते हैं ये सब थ्रू इम्पैक्ट कंसल्टिंग, एंड द पे इज गुड, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वन थिंग आई हैव आल्सो गिवन कपल ऑफ इंटरव्यूज फॉर द इम्पैक्ट कंसल्टिंग जॉब्स। वहां पे एक चीज मुझे समझ में आई कि भैया यू शुड स्टार्ट अ लिटिल बिट अर्ली। इफ यू आर इन 30s, देन क्या होता है ना कि टू यू नो वो इम्पैक्ट कंसल्टिंग सेक्टर के साथ आपकी जो रिजिडिटी बन जाती है यूपीएससी की तैयारी के साथ, वो मैच होना बहुत मुश्किल हो जाता है। इफ यू कैन स्टार्ट अर्ली, इफ यू कैन लेट्स से कि 26-27 में ही घुस जाते हैं इम्पैक्ट कंसल्टिंग में, योर ब्रेन विल बी इन अ स्टेज कि हाँ मैं थोड़ा फ्लेक्सिबल हूँ, थोड़ा माउल्ड हो जाता हूँ, एंड यू कैन ग्रो मच मोर, मतलब आगे उसमें बहुत पैसा है, बहुत कमा भी सकते हैं। बट इफ यू आर 30 प्लस, इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि आपके अंदर थोड़ा वो रिजिडिटी आ जाती है, विच इज प्योरली साइकोलॉजिकल इन एनी पर्सन।